Dear friends, welcome to this video. In this video, we'll be discussing about the time series, but the second half of it. So in the previous video, I have said what is a time series, right? So let us just revise few of the things that we have done. What is a time series? That means whenever we talk about a time series, that means it is nothing but a statistical data. It is a statistical data written in a chronological order, right? It is in the chronological order. Also here we make sure the time duration between any two successive data is equal. That means दो data है उनके बीच का जो time interval है वो same है. उसे हम लोग time series कहते हैं. अब ये जो time series है उसका use क्या है? We use the time series to predict the future. Once we have the time series, we try to guess what would be the value in the future. So we want to study the fluctuation in the time series. किस तरीके से वो change होता है. तो ये जो फ्लक्चुएशन थे वो फ्लक्चुएशन को हम लोग ने चार पार्ट में डिवाइड किया था, राइट. द फर्स्ट पार्ट वी यूज्ड टू कॉल इट एज नथिंग बट द ट्रेंड, जो हम टी से डिनोट करता है, या फिर सेक्युलर ट्रेंड, राइट. दो नाम थे, ट्रेंड कह सकते हो, सेक्युलर ट्रेंड. ट्रेंड इज नथिंग बट अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज और डिक्रीज. यानी कि ट्रेंड जो है वो दो तरीके के होता है. इट कुड बी आइदर इंक्रीजिंग ट्रेंड और इट कुड बी डिक्रीजिंग ट्रेंड, राइट. दो टाइप के ट्रेंड्स हैं. एंड आफ्टर द ट्रेंड वैल्यू हम लोग ने देखा था कि दूसरे टाइप का फ्लक्चुएशन जो था, द सेकेंड टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन वाज नथिंग बट अ साइक्लिक फ्लक्चुएशन. साइक्लिक फ्लक्चुएशन यानी कि वो फोर फेज होता है वहां पे, राइट. चारों फेज के बारे में हमने देखा था. वो साइकिल ऊपर जाना, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवर. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द सीजनल फ्लक्चुएशन, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं. सीजनल फ्लक्चुएशन लेसर देन 1 ईयर, ज्यादा पीरियोडिक होता है. और इन तीनों को छोड़ के जो भी बचा, दैट बिकम्स इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट, राइट. सो दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. इन टुडेज सेशन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी कैन एस्टिमेट द ट्रेंड. यानी कि डेटा के ऊपर से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ऑन अ लॉन्ग टर्म इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट एस्टिमेटिंग द ट्रेंड. The estimation of the trend can be done in three ways that we are going to discuss. First is nothing but the most simple. The name is nothing but the freehand curve method. The second is nothing but method of moving average. And the third is the most important one, and that is nothing but the least square method. The student who have studied correlation already know about the least square method, some basic idea they do have. But to estimate the trend, that means we will be discussing what kind of a trend it is, whether it is increasing or it is decreasing. To do that, we have three methods: freehand curve method, method of moving average, and the least square method. Okay, so we go for the first method, that is nothing but the freehand curve method. So in freehand curve method, it is a really simple one. What we do, we just plot the point on a graph paper and draw smooth freehand curve passing through as many points as possible, and merely by inspection we just choose the point that we want, right. So we will go for an example. It is really simple. What we have to do, we just have to plot the point and draw graph, freehand smooth graph passing through maximum number of point that we want. And then we start thinking whether this graph is increasing or decreasing. If it is increasing, we call it as an increasing trend. If it is decreasing, it is called as a decreasing trend. The method is simple and time saving, but it is based on the personal judgment. Why I am saying it is a personal judgment, let us see what is the reason behind it. Because while choosing a point from which I need to pass the curve will be completely based on my ideas, right. So it might be possible for me my curve is more sharp upward, for you it might be more, not so sharp, right. But still this method provides us the estimate of the general tendency of the data. As a personal bias is introduced while drawing the curve, this method is not so much used in practice. And to draw this graph, we need an expert who can decide and have a greater judgment about the given time series. Right? So this is nothing but the short note for freehand curve method. Right? It is really simple. Just pause the video and go through the slide once. I will go for the example. This is nothing but the time series. What I have to do, I have to draw the freehand curve. So what is the freehand curve? For that I need to plot the graph. So this is nothing but my graph. I will start plotting the points.
So 1976, 62. So this is nothing but the first point. 1977, 63. Second point. Third, fourth, fifth, and sixth. Right. So this is nothing but what I did is I just plotted the point. Now comes the second part. That means I'm supposed to draw a freehand curve from the point which I feel maximum number of points should cover. So what I do, I just draw a graph like this. So this is nothing but my freehand curve. If you observe, these 2 points are not considered yet, because what I said, I will try to cover the maximum number of points as possible. But from this graph, I can see it is nothing but the increasing trend. Right? So it is the simplest method, but there is a personal bias. As I said, I felt I should leave those 2 points, but it might be possible somebody else draw the same graph like this. He might leave the other 3 points. Correct? So it is on the personal judgment. That is nothing but the drawback of this method, but still this method is the simplest one. So what we did is free hand curve method. The second is nothing but an interesting one, that is nothing but the method of moving average. This method of moving average, we find out average of n years where n is greater than or equal to 3, and we keep on moving. So in the name of the method, there is an entire explanation. We find out the average and we keep moving. Let's see what this method is. This method is used for evaluation of non-lines trend is possible under this method. Means whenever the data is not so linear, it is not always increasing, it is making some kind of a curve, then in that case we can go for this method. We can calculate the moving average for n years where n is any integer greater than or equal to 3. Let us just try to understand this by using an example. What I said, I am working on n where n is greater than or equal to 3. But my n can be any even number or odd number. Right? So we divide our procedure into 2 parts. The first is, if my n is an odd number, what we do, we find out the average or arithmetic mean of first n value and represent it against the middle value. So जो भी पहले n ऑब्जर्वेशन होंगे उनके हमें एवरेज निकालना है और उसका जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगा वहां पे लिखना है. देन वी नीड टू मूव. मूविंग एवरेज मेथड, एवरेज निकाला, नाउ स्टार्ट मूविंग. फर्स्ट जो डेटा है उसको निकाल दो, डिलीट कर दो और उसके अंदर उसके नीचे के डेटा को ऐड कर दो. Right? For an example, suppose if I have 1, 2, 3, 4. So I will first of all, if n is 3, I will find out average of first 3 value, उसको बीच में लिखूंगा. Now I will move. Then first data को delete करके next data को add करूंगा. Now this is deleted and this has been added. है ना? तो मैंने move किया. This is nothing but the moving average. I will find out the arithmetic mean of next 3 value और उसके middle में लिखूंगा. Right? So this is nothing but the moving average method when n is an odd number. So delete the first observation and find the arithmetic mean of the next n observations. This procedure is continue till the last value is reached. है ना? Last value जब तक नहीं मिलता वहां तक हमें इस चीज को करते रहना. So suppose this is a data जहां पे years दिए थे, कुछ production value दिया है और मुझे निकालना है 3 yearly moving average. I need to find out this 3 yearly moving average. To find out 3 yearly moving average, मुझे पहले 3 साल का एवरेज निकालना है. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने 3 साल के टोटल करते गए, है ना, 3 years. फर्स्ट 3 ईयर का जो टोटल है वो मैंने उसके सेंटर में लिखा है. नेक्स्ट 3 ईयर का टोटल मैंने उसके सेंटर में लिखा है और उसके बाद के 3 इयर्स का सेंटर जो है मैंने उसके सेंटर में लिखा. एंड एट देन लास्ट 3 इयर्स का. राइट? सो दिस इज द वे आई हैव रोट द टोटल. जो टोटल है वो मिडिल ऑब्जर्वेशन के सामने रखा है मैंने. राइट? फर्स्ट 3 का मैंने 2000 ईयर के सामने रखा है, नेक्स्ट 3 का मैंने 2001 के सामने रखा है, नेक्स्ट 3 का 2001, 2 एंड नेक्स्ट 3 का 2003. So we have to keep on moving. Once I have the total with me to find out the average, I will go for 3 yearly moving average, यानी कि एवरेज निकालूंगा. So I'll divide it by 3. जितने भी वैल्यूज थे मैंने हर किसी को 3 से सिर्फ डिवाइड कर दिया. So this is nothing but my trend value. Now if you observe,
this trend value is increasing. That means it is nothing but an increasing trend. Right? So whenever the n is odd number, what we do, हम लोग average निकालते हैं और move करते रहते हैं. Right? So that is something that we do in this method. But over here n was an odd number. But suppose अगर मैंने even number बोला, right? अगर suppose if I talk about the even number, then मुझे क्या करना होगा? Suppose for an example even number 4 consider करता हूँ. So I need to find out average of first 4 number. But first 4 number का middle observation तो नहीं है, right? Because 3 होता है तो middle observation था 2000. जब मैंने 4 को लिया then I have 2 years as my middle observation. Hence इस केस के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है. तो whenever n is even number, we have to do something extra. So we'll talk about it. Okay. So suppose if n is even, the procedure is same. We need to add one extra step. So find the arithmetic mean of first n of values and represent it between the middle 2 years. है ना? अभी अभी मैंने आपको बताया सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में मैं फोर्थ के बारे में सोच सकता हूं. The trend cannot be calculated for the certain year. है ना? Because वहां पे क्या था in the previous example, अगर मेरे पास पहले 3 साल ये है, देन उनका एवरेज निकालते वक्त मैं वैल्यू इसके बीच में लिखता था, इसके सामने लिखता था. बट अगर सपोज मेरे पास 4 इयर्स है तो वैल्यू जो है मैं इन दोनों के बीच में लिखूंगा. अब किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए मुझे ट्रेंड वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे सेंटर में लिखना है तो मिडल 2 ईयर है उनके सेंटर में लिखूंगा. डिलीट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट एन ऑब्जर्वेशन. जैसे कि आगे करते थे, ऊपर का एक वैल्यू निकालो, नीचे के एक वैल्यू ऐड कर दो. This procedure should be done till the last value is reached. So suppose ये डेटा है, मुझे 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है. तो देखो मैंने क्या करना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज यानी कि पहले 4 का एवरेज मुझे निकाल के आई नीड टू राइट इट इन बिटवीन दिस टू वैल्यूज. यहाँ पे मुझे लिखना होगा पहले 4 का, है ना? तो आप देखोगे इफ आई ऑब्जर्व 243, 251, 254, 256, उनका एवरेज होता है 251 जो मैंने उनके बीच में लिखा है. इफ यू ऑब्जर्व आई हैव रिटन इन बिटवीन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा मुझे नेक्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल के इनके बीच में लिखना है. सो आई डिड दैट, है ना? एवरेज यानी कि ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 और उसके बाद एट द एंड यहां पे आ गया मैं. करेक्ट. सो दिस इज द वे आई हैव कैलकुलेटेड 4 ईयरली मूविंग एवरेज. बट यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि ट्रेंड वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं है. यानी कि ये 251 जो है वो हमारे गिवन ईयर में से नहीं है. इट इज फॉर इन बिटवीन 1998 एंड 1999. बट हमें किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल देते हैं. यानी कि इन दोनों का एवरेज जो होगा दैट आई विल राइट मिडल ओवर हियर, दैट इज 1999 के लिए मैं इन दोनों का एवरेज लिखूंगा. फिर नेक्स्ट 2 जो नंबर है मेरे पास उनका एवरेज मैं 2000 ईयर के लिए लिख दूंगा. सो फ्रॉम 4 ईयर मूविंग एवरेज हम लोग ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे बाय टेकिंग द एवरेज. सो 251 और 254.25 दोनों का एवरेज होता है 252.625. नेक्स्ट दो जो वैल्यू है उनका एवरेज होता है 253.5.